Hello everyone, good evening. Today we are going to start with the first video of EDC1. The chapter that we are going to start is BJT diode, but before BJT as a bipolar junction transistor. But before starting with that, let me introduce you with few, what do you say, diode configuration. What do we mean by reverse bias, forward bias, how is diode formed, what are the potential junctions, what are the N region and the P region. So we'll be starting up with very much basics, and I hope everyone please pay attention so that it becomes very easier for you to get your doubts cleared as and on the lecture progresses. Now this is the basics, the very much simple basics of or I would say the fundamental basics of 12th standard science, wherein the concept of energy level is being described. Now a silicon atom is being shown in the figure. Electrons in the different orbit are attracted towards the nucleus with a unique force of attraction. So if I am having, say suppose 2 8 16 electrons, so on and so forth, 2n square formula say. So if what do you say, if I am having the number of say if I am considering the silicon atom into consideration, of which the nucleus is having plus 14 sign, the first orbit will have 2 electrons, the second orbit over here will have 8 electrons, and the last orbit or the valence orbit will have 4 electrons in it. Now can I say that if this is the surface of the nucleus, then these are the energy levels. Now what do we mean by energy levels? We'll come to it very slowly and smoothly. Now can I say that if this is the electron in the first orbit of a silicon nucleus, then this what do you say, electron will be attracted towards the nucleus with a certain force of attraction. Similarly, this first electron over here in the this electron in the first orbit is attracted towards the nucleus with a certain force of attraction. Now similarly, the second orbit electrons which are being positioned at certain point will be having a certain force of attraction towards the nucleus. Similarly, the valence orbit electrons which are there in the valence orbit will be having a certain force of attraction towards the nucleus. This is what is being explained over here. Now with a unique force of attraction, and if they are in a particular orbit, for example say the first orbit, they will have a unique energy level. That means electrons in the first orbit will have a unique energy level. This gives the concept of energy level in an atom. Now that is, when we are talking about an atom, we have to talk about an energy level. For example, if this is the electron in the first orbit, and similarly this is the electron in the first orbit, another electron in the first orbit, then can I say that the energy of the electron or the force of attraction of this electron towards the nucleus will be almost equal to the force of electron by force of attraction by this electron towards the nucleus. In another words, can I say that if I am about to plot the energy level as a straight line, which will be what do you say, cleared in some in the due course of the lecture. So can I say for simple terms कि अगर आपके पास n1 है, तो n1 will be the energy of electron in the first orbit of what do you say, the atom, I would say. Please do pay attention, atom is different, molecule is different, beta. Now n1 will be the number of what do you say, the energy of the electrons in the first orbit of the silicon atom, for example, which we have taken into consideration. N2 will be the energy of the electrons in the second orbit of the silicon atom, and similarly n3, can I say, it will be nothing but the energy of the electrons in the valence orbit or the valence level, in another words. Now as we go away from the nucleus, but of course force of attraction on electron decreases while the energy of electron increases. जैसे जैसे मेरा बच्चा घर से दूर जाता है, तो घर का दबाव वडी से प्रेशर कम हो जाता है, और वो बाहरी दुनिया में ज़्यादा उसका क्या कहते हैं, उसका एनर्जी बढ़ जाता है. दिस इज़ व्हाट हाउ आई वुड रिलेट. सो नाउ as an electron goes away from the nucleus, the force of attraction is becoming lesser by every inch that it is moving across, and the what do you say, the energy of the electron increases. So उसका force of attraction एक बाजू जितना कम हो रहा है, उतना ही उसका free energy या फिर energy of the electron increases. Now for a simple diagram over here, it is being what is shown that if this is the surface of the nucleus, consider that this is an electron over here in the valence orbit or the final orbit of a silicon atom, and over here we have a free electron. Now what do we mean by free electron? What is that? Let us see how an electron can be taken out of valence orbit, or what is the concept of free electron. Now all the electrons in the valence orbit are attracted towards the nucleus with some force of attraction, but of course if
I am having this valence orbit over here, then these electrons which are there in the valence orbit will be having a certain force of attraction towards the nucleus, which is minimum compared to the electrons in the inner orbit. But of course जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इनर ऑर्बिट्स का न्यूक्लियस की ओर रहेगा, उससे तो कम ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बाहर के मॉलिक्यूल बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा. In another words, can I say that the force of attraction of the electrons in the outermost shell or the valence orbit would be lesser than compared to the inner orbits? Now, hence it becomes easier to dislodge, or I would say to dislocate these electrons from their orbit. If enough energy is applied to these electrons, in the valence orbit, then these electrons come out of their orbit. Now, this dislodged or dislocated electrons goes to an imaginary orbit. For example, if the electron is over here in the valence orbit over here, then if you supply a certain amount of external energy, then it moves to an imaginary orbit known as the conduction orbit at a very high distance from a nucleus. But of course, if it is at a very high distance from the nucleus, then the force of attraction will be very much less. If the force of attraction is less or equal to 0, then I would say now my electron which is there over here is known as a free electron. उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है. It is being written in the simple words over here, where this dislodged electron goes to the imaginary orbit at a very high distance from the nucleus, where the energy is very large, and at the same time the force of attraction is as good as nil. Now, these electrons are beyond the influence of the nucleus and are known as free electrons. But of course, अगर वो न्यूक्लियर के प्रेशर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है या उसके रेंज में नहीं है, then it is called as free electron. These electrons can move at any random direction, in any direction. Now, what do we mean by concept of energy band and intrinsic semiconductor? My students, please be patient. मुझे पता है आप लोगों को ये intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor पता होगा, but let me give you an engineering approach. What do we actually mean? Now, इन सिलिका और जर्मेनियम द इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट टू अस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो भी हमारे पास बाहर के शेल में या बाहर के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस टू अस, बिकॉज दीज आर द वंस विच आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर एटम्स, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल से आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा टू अनदर इलेक्ट्रॉन, एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड. In silica or germanium, the electron important to us are the valence electrons. If we neglect the 10 protons and 10 electron in case of silica and 28 protons with 28 electron in case of germanium, then we can represent silica and germanium with the same method as shown in figure. I'll show you the figure. That means only 4 protons and and with 4 electrons in the valence orbit. Now, let me see whether it is visible or not, beta. Yes, it is visible now. Now, over here, this is presentation of silica or germanium. If I am considering the 10 proton and 10 electron in case of, if I am neglecting those, then I am left out with only +4 in the valence orbit in the case of a silica. And if I am discarding or I would say eliminating 28 electrons and 28 protons in case of germanium, then this is the +4 electrons left out in the valence orbit. Now, this +4 along with the +4 electrons over here are being kept over here in a structural bond. And can I say that this electron over here will be forming a bond with this electron? सिंपल सी बात है, ये उसे बोलेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव पे चल, and they will form a bond which is known as a covalent bond, an imaginary bond which is not seen to the naked eye. Therefore, since for silica or germanium to become stable, 8 electrons are required in the valence orbit, but of course we all know from basic physics. Now, to do this, every silicon atom share 4 electrons from their 4 silicon atoms in the neighbor. दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये अपने आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्डिंग करेंगे, एंड दे विल फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ विद दिस व्हाट वी गेट इज नोन एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और ISC. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एन एटम, all electrons in the first orbit were under the influence of only one nucleus, and also the electrons in the electrons in one atom around the first orbit. But in crystal the case is different. For example, let me give you, suppose if this is the silicon atom and this is another silicon atom, can I say इसके अंदर का जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके 2, तो कैन आई से उसके ऊपर इसके खुद के न्यूक्लियस का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही, but since they have now formed a bigger structure or a crystal which are closely packed, since they are closely packed, can I say
इसके फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे ये आजू बाजू के न्यूक्लियस का भी प्रेशर रहेगा. इन अनदर वर्ड्स द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन from the neighboring nucleus which are which are nearby it. Hence, but in the similarly it has been written into words, but in the crystal case is different. In this case every atom will occupy different position in the crystal. Example, electrons in the first orbit of a particular atom will not be under the influence of its own nucleus. Somewhat important hai bacha, please do pay attention. But also nucleus and electrons around it. For example, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो ये जो बाकी के न्यूक्लियसेस है इनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर रहेगा. इन अनदर वर्ड, हेंस द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल एटम्स इन अ क्रिस्टल कैनॉट हैव वन यूनिक एनर्जी लेवल. बट ऑफ कोर्स अगर इसके फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन सारे न्यूक्लियस के अंडर प्रेशर में रहेंगे तो उसका एक एनर्जी लेवल होगा. सिमिलरली इसका अगर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे इसके अंदर, तो इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो बाकी सारे जो ये वाले स्ट्रक्चर रहेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस क्रिस्टल के अंडर, तो भाई उनके न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर रहेंगे. सिमिलरली इफ़ आई एम कंसिडरिंग द केस ऑफ दिस एटम ओवर हियर, तो इसके अंदर के जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो कैन आई से वो ना कि इसके खुद के न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर रहेंगे, बट ऑल्सो दे विल बी अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस एंड समवॉट यहाँ पे भी जो इमेजिनरी न्यूक्लियसिस होते उनके अंडर के प्रेशर पे भी वो रहते. इन अनदर वर्ड्स, hence electron in the first orbit of all the atoms in a crystal cannot have one unique energy level. The energy level of these electrons depend upon the position of atom in the lattice, or in another words the crystal, and the number of nucleus of electrons around it. It means that the electrons in the first orbit of all the atoms, somewhat important, can I say इसके अंदर के electrons का first orbit के electrons का energy level, इसके अंदर के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल और इसके अंदर के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल, ये तीनों या फिर आई वुड से इन सब के इनरमोस्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बिकॉज दे आर बीइंग व्हाट यू से, बिकॉज इट इज़ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो सर ये जो +4 आपने लिखे ना सर, सो दे विल ऑल बी हैविंग एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर दैट स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन. सो what do you say, it means that the electrons in the first orbit of all the atoms will not only have the same energy level, but these levels will differ by some amount, एकदम infinitesimal, एकदम small amount से of the energy. Now can I say, अगर ये लाइन है एकदम बिलोएस्ट लाइन है, इफ इट बिलोंग्स टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, देन इसके ऊपर वाली लाइन है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल, देन इसके ऊपर वाला लाइन है तो इसके फर्स्ट व्हाट डू यू से इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल. इन अनदर वर्ड दे विल माइन्यूटली वेरी. नाउ अगर आप एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें देन इट विल अपीयर एज लाइन्स ओवर हियर, बट इफ यू लुक फ्रॉम अ ब्रॉडर पिक्चर, इफ यू लुक इट थ्रू अ नेकेड आई, कैन आई से दिस विल लुक लाइक अ बैंड. In another word, if we draw the energy level of electrons in the first orbit of all the atoms, they will differ slightly, or most of them will have the same energy level. Something to be noted about. And then we can get cluster of energy levels. This is what energy level means बच्चा. यहाँ पे आपका energy level का definition आता है. As we discussed about the electrons in the first orbit, can we say that the same discussion can be duplicated for the electrons in the second, third orbit and valence orbit of an atom? Now, the diagram is somewhat over here. I'll remove this page. Now, the energy diagram is shown as over here. This is the what do you say, the first orbit के जो electrons का energy level होगा ये उसका band है. Similarly, second one, what do you say, second one जो है यहाँ पे, then this is the energy what do you say level of the electrons in the second what do you say second orbit of the atom. Similarly, this will be the third orbit. Last में जो मेरा इलेक्ट्रॉन एकदम इमेजिनरी लेवल पे चला जाता है, वी यूज टू कॉल इट एज अ कंडक्शन बैंड, तो वहाँ कंडक्शन बैंड में भी उसका खुद का एक एनर्जी लेवल होगा. सो कैन आई से नाउ this is the surface of a nucleus. Now this is one band, or I would say band, then this is what do you say, another band, this is another band, and this is somewhat very much far away. So can I say इन दोनों के बीच का जो band का gap है, I would like to call it as a band gap energy, or in another words the forbidden gap.
the one which is forbidden, the one which is not taken into consideration, the one which we say that अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, it goes to a free state and it is moving in any random direction. So यहाँ पे भी एक बैंड है, यहाँ पे भी एक बैंड है, दोनों के बीच का गैप है. Hence, there is another name for forbidden gap known as band gap energy. Now, the electrons which are making covalent bond and are in the valence orbit, that is in the last orbit over here, of different atoms are known as valence band electrons. But of course, in the case of silica, ये मेरा जो third band होगा, उसमें मेरे valence electrons होंगे. These electrons are important to us because they become free at a very low energy supplied to them. That means कि उनको एकदम थोड़ा सा करंट दो एंड दे आर मच मोर ईजियर टू व्हाट यू से, आप थोड़ा सा उन्हें एनर्जी दो एंड दे आर वेरी मच ईजियर टू डिसलॉज. नाउ सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? नाउ लेट्स सी. रिमेंबर बैंड गैप एनर्जी का कंसेप्ट क्या था बेटा? प्लीज डू कीप इन माइंड. नाउ सपोज इनफ एनर्जी इज गिवन और सपोज से बैंड गैप एनर्जी जो मैंने बोला था इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड. दैट मीन्स आपने सपोज ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के, आपने इनफ इतना बैंड गैप एनर्जी दिया. व्हाट इज इट प्रोबेबिलिटी? ये बाय डिफॉल्ट कंडक्शन बैंड में जाएगा बिकॉज दिस प्लस दिस एनर्जी विल गिव यू रिजल्टेंट ओवर हियर इन द कंडक्शन बैंड. नाउ suppose enough energy or the band gap energy is applied to the electrons in the valence band making bond, then this electron goes to an energy level or the energy band which is very much at a higher state or known as conduction band, which is at a very high energy level and at a very large distance. Since the distance is very large, the influence of all these cores or in another words the nuclei on these electrons will become zero. Because the influence is zero, these electrons are now known as free electrons. जैसे कि मैंने कहा था, अगर मेरा बच्चा घर से निकलता है तो घर पे उसके पास सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पेरेंट्स का, पर जब एक बार वो बच्चा दूर चला जाता है तो उस पर उनका कंट्रोल थोड़ा बड़ी से कम हो जाता है. और अगर मेरा बच्चा फॉरेन चला जाए तो वहाँ पे तो कोई देखने के लिए है ही नहीं. हेंस दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Due to the zero influence, these electrons can move in any random direction with any velocity. With any velocity, the band in which this electron goes is known as conduction band. Simple enough. Now, what do we mean by thermal agitation? Ab, these are the terms which are very much important, not only in engineering but post engineering also. If you are applying for gate examination or for research purpose, these all terms are very much small but they give you very good results. Now, what do we mean by thermal agitation? Thermal means heat. That means you're giving some kind of heat or some kind of energy. Let us see the actual definition. Now, if an intrinsic semiconductor or ISC is kept at ambient or room temperature, then thermal energy is by default given to the electron forming bond, that is electrons in the valence band. Now, if this energy is equals to 1.12 eV in the case of silica or 0.72 electron volt in the case of a germanium, then the electrons break the covalent bond. And become free. Or in another words, the electron jumps from valence band to the conduction band. Yani valence band, then there is a band gap energy, and then there is a conduction band. Now, when one electron becomes free, it creates a deficiency of one electron known as hole. It means whenever an electron becomes free, a hole is generated. Now, I'll come to that later, but a hole, what do you mean by actually a hole? Now, generation of electron and hole pair in a semiconductor at room temperature is known as thermal agitation. Now, number of electrons or holes generated are always equal in number. Now, what do we mean by a hole? First of all, beta, I'll just put a line over here. If I ask my students directly what is the charge on a hole, generally my students will answer that it is a positive, what do you say, it is positively charged. Now, अभी ध्यान से सुनना बच्चा. When an electron is being given certain energy in the valence orbit, then it what do you say, it jumps out of the valence orbit and what do you say, the covalent bond is broken. Now, अभी electron which is negatively charged, now इलेक्ट्रॉन जो मेरा है वो नेगेटिवली चार्ज, अगर वो कहीं जंप कर रहा है तो इट क्रिएट्स अ वैक्यूम ओवर देयर. नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन अ वैक्यूम बच्चा? वैक्यूम इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल. बट since the electron has left that place, it has created a vacuum. Now, when you compare that vacuum with your electron, your vacuum appears to be positive in compared to electron because electron is negatively charged. Hence, you say that holes are positively charged. Varna generally, if anyone asks you, holes are not positively charged, bacha. They are just created vacuums, or I would say they are just spaces
or vacuums created by the deficiency of electron. That is what a specific or scientific definition of a hole should be. Now, so in another words, अभी यहाँ पे क्या बताया, when one electron becomes free, it creates deficiency of one electron known as hole. Deficiency of one electron is known as hole. हाँ बेटा, I am still repeating my words. The number of, so can I say, जितने मेरे electrons free हुए उतने ही मेरे holes create हुए होंगे. In another words, can I say at thermal agitation the number of electrons will be always equal to the number of holes. दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर अगर 1.12 EV आपने सिलिकॉन को दिया और 0.72 आपने जर्मेनियम को दिया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, electrons will break the covalent bond and they will become free electrons. So yes, at room temperature the formation of electrons and holes is known as thermal agitation. Now, mean free path, what do we mean by that? Let's see beta. The free electron in the ISC or the intrinsic semiconductor keeps on moving in random direction. अभी मेरा बच्चा फॉरेन चला गया, वो यहाँ वहाँ भटक रहा है. Now, इन रैंडम डायरेक्शन विथ रैंडम वेलोसिटी, कभी गाड़ी पकड़ रहा है, कभी चल के जा रहा है, कभी उबर कर रहा है, कभी ओला कर रहा है. अभी तो लंदन में भी ओला है बेटा, हाँ, पर जाना नहीं है बेटा, कोविड है, जाना नहीं. हाँ, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ISC keeps on moving in random direction with random velocity. Now, the direction of the movement changes with each collision. Now, while in motion they travel different distance between टू सक्सेसिव कोलिजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो यहाँ से यहाँ वो सर्टन वेलोसिटी से यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जा रहा है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जा रहा है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे. सो कैन आई से द कोलिजन्स आर हैपनिंग रैंडमली and with each and every collision the velocity is either decreasing or increasing depending upon the type of collision it is occurring, either it is elastic or inelastic. Now, for example, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, I'll call this path as a x1 or free path first, free path x1, then x2, then x3. Why the name free path is because this is the distance or this is the motion traveled by the electron which is free in nature, and the entire structure or the crystal is of ISC. Now, x1 is the first free path, x2 is the second free path, and x3 is the third free path. So yes, यहाँ पे the mean free path is mean or the average, can I say, is nothing but x1 plus x2 plus x3 upon 3. Now, since the motion is random over here, now something important, bacha, then on an average there will be as many electrons passing through a unit area in a metal in any direction as in the opposite direction. For example, अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता है ना बेटा. सपोज यही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है. इन अनदर वर्ड, देयर विल बी एज मेनी अपोजिट डायरेक्शन जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं इन अ गिवन टाइम. हेंस द एवरेज करंट इज जीरो. इसीलिए आप जब रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन को टच करते हो आपको करंट नहीं लगता, बिकॉज जितना मेरा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है सॉरी उतना ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. हेंस व्हाट यू से उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द एवरेज करंट इज जीरो. नाउ मूविंग टू द फर्दर पार्ट, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट डोंट वरी, आई वोंट बी कवरिंग ऑल. जो जो इंपॉर्टेंट बच्चा मैं वही बताऊंगा आपको. लेट मी सी वेदर इट इज विजिबल और नॉट. Now, when an external or internally generated electric potential or field is present across the ISC, अब मज़ेदार है बेटा, अब मज़ा आएगा देखना. अगर आपने क्या किया, अभी आपने ISC तो लिया ही था, प्लस अभी आपने क्या किया, बाहर से एक पोटेंशियल लगा दिया, एक पोलैरिटी लगा दी आपने. नाउ जनरली स्पीकिंग, अगर आप डायग्राम देखो, यहाँ पे मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे थे, एंड आफ्टर अ सर्टन पॉइंट दे आर बीइंग एक्यूमुलेटेड, वो एक ही डायरेक्शन में जाने लगे. वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया. अगर आपका ये पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव विल ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से, एंड वडी से यहाँ पे मेरे पास जो पहले इलास्टिक और यहाँ पे जो मेरे पास पहले फिलहाल कोलिजन्स हो रहे थे, वो अभी सारे कोलिजन बंद हो जाएंगे, एंड द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रीली इन डायरेक्शन विल नाउ बी अलाइंड इन नेचर. नाउ दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स under the presence of a potential battery or a potential difference is known as drift. In other words, the movement of electron due to the presence of potential gradient. Now what do we mean by gradient? Gradient का मतलब बेटा डिफरेंस, हमेशा याद रखना. थोड़े इंग्लिश वर्ड अच्छे अच्छे सिखाऊंगा बेटा, प्लीज डू रिमेंबर. Gradient means difference. Now what do we mean by potential difference then?
यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है। कहने से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब भी आप प्रैक्टिकल में या फिर BEE में मेरे बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा, दिस वाज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड दिस वाज कनेक्टेड टू सम पॉजिटिव पोलैरिटी। जब आपने आई गेस मैश एनालिसिस या फिर कोई भी थियरम प्रूव करने के लिए आप प्रैक्टिकल में किया होगा, तो कैन आई से देयर वाज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट दीज टू पोलैरिटीज। If there is a difference in the potential, there is a better word to say now, potential gradient। क्या बोलते हैं बेटा? gradient। now or an electric field I, आप इसे or an electric field is known as drift। now the velocity with which the electron moves is known as drift velocity। we don't need to go into very much basics over here because this is nowhere asked। mu is v is equals to mu e, where v is the velocity of the electron, mu is the mobility and e is the applied field, because it is nowhere what do you say implicated into the syllabus। so as for now we won't be going with this velocities। now the thing which we want to go further is over your mean लाइफ टाइम। मैं वापस दोहराता हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना। अगर आई जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट इफ यू वांट। when an external or electric potential field is present across the ISC, the velocity of the electron increases indefinitely and each inelastic collision with ion electron loses its energy, while at the same time there is a force of attraction on electron due to the applied field। यहाँ पे force of attraction आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी आपने लगाई है। ये पॉजिटिव पोलैरिटी बेटा यहाँ पे ये प्लेट पे या फिर ये पार्ट पे अट्रैक्ट करेगी ये इलेक्ट्रॉन्स को। दिस मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल। अगर आप पॉजिटिव यहाँ पे लगाते और नेगेटिव यहाँ पे लगाते तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलाइंड है बच्चा, वो ये साइड अलाइंड हो जाते फिर। नाउ mean lifetime, what do we mean by mean lifetime? The number of electrons and holes generated due to thermal agitation, but of course its definition says are same, therefore therefore it is a must that a generated electron do recombine with a hole, that is the broken covalent bond is again made, that is somewhat important। now it means if a free electron get its life, then it is true then its life will also end। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन अगर क्रिएट हुआ है तो वो वापस से होल के साथ रिकम्बाइन होने ही वाला है। द एवरेज ऑफ ऑल द टाइम्स T1, T2, T3 एक्सेट्रा फॉर विच द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स फ्री इज नोन एज द मीन टाइम। now mean lifetime is given by T1 plus T2 plus T3 upon 3। this is a simple definition of mean lifetime। mean lifetime is nothing but the average of all time for which the electron remains free। now diffusion बच्चा somewhat very much important। एक drift याद रखना बच्चा, drift was due to the potential battery जो externally आपने लगाई थी, जो internal कुछ नहीं था बेटा। now somewhat important। now diffusion, now what do we mean by diffusion? let me give you a clear cut example। suppose यहाँ पे मेरे पास दो पानी की टाकी है बेटा, simple logic। now यहाँ पे मेरे पास पानी ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे पास पानी कम है, तो कैन आई से मेरा पानी जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। इन अनदर वर्ड्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन विल टेक प्लेस टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी भी बता रहा हूँ बेटा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और डिफरेंस यू वुड से is known as diffusion। if you want I can read it out। now number of free electrons present in any area of semiconductor depends upon how many electrons are being generated and how many are again getting recombined। this two things are not certain। for example अगर यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन या होल रिकम्बाइन और वो ज़्यादा हो रहे तो यहाँ पे नहीं हो रहे होंगे, यहाँ पे कम हो रहे होंगे। therefore two equal area in semiconductor may or may not have the same number of electrons। it means at any instant, आप कोई भी टाइम पे ले लो, we can always mark two area where the concentration of electrons is different as shown in the figure। now यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, सो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव होगा। now it means that there exists a बच्चा, let me see whether it is visible। yes it means that there exists a concentration gradient or concentration difference between the area A on the left and B on the right। due to this the concentration gradient between A and B, electron moves from high to low concentration region। the movement of electron is known as diffusion and the current due to this diffusion is known as diffusion current। now in this video up till we'll be stopping a diffusion current। in the next lecture we'll be starting up with extrinsic semiconductor। up till then please do view the video once and do message me for any doubts। thank you।